नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और हम इस समय दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहाँ पे पैरा गेम्स चल रहे हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहे हैं और इस समय यहाँ पे फुटबॉल के टूर्नामेंट चल रहे हैं। और हमारे साथ राजेश तोमर मौजूद हैं जो कि सीपीएसएफआई के प्रेसिडेंट हैं और जानकारी लेते हैं कि फेडरेशन अभी हाल ही में 2 साल पहले हमें पता लगा 2 साल पहले बनी है और क्या इसके पीछे मोटो क्या है, विजन क्या है, क्या सोच क्या है, हम जानकारी लेते हैं। सर, ये रीजन क्या है कि अभी हाल ही में बनी है? क्योंकि बहुत सारी फेडरेशंस जो हैं वो 20 30 30 40 साल से बनी है। सीपीएसएफआई अभी हाल ही में 2 साल पहले। Cerebral Palsy Sports Federation of India is a very young organization, barely about 2.5 or 3 years old, and we are endeavoring to produce champions for 2032 Paralympic Games. We had made a representation, and we have members pan India, about 26 affiliated member pan India, those who are working in this domain of cerebral palsy. Merely making a president secretary in a state doesn't really solve the problem, but we have people who are working in the domain of cerebral palsy especially, and they are NGOs who are our affiliated member. They conduct events at their level, at the district level they have, and we conduct at the national level. And we had taken our vision and our approach, and through our members, to an approach Ministry of Youth Affairs and Sports. And I'm grateful to Shri Anurag Singh Thakurji, who believed in us. We told him that we had apprised him that way, that in Paralympics, there in athletics itself, I'm not talking about football or any other thing, in athletics itself, in the 30s class, 32 to 38, there are approximately 45 events in Paralympics and Para-Asian Games. So which means gold, silver and bronze, if हम सारे इकट्ठा करें तो 135 मेडल हो जाते हैं। और इंडिया ने पिछले पैरालंपिक छोड़ के उससे पहले जितने भी पैरालंपिक गेम्स हुए हैं और पैरा एशियन में 30 क्लास में पार्टिसिपेशन ही नहीं होता, मेडल तो छोड़ दीजिए आप। So we are working in this domain, and which the ministry believed in us, and I'm grateful to, as I said, our honorable Prime Minister for starting this KHELO India for Para Games for the first time. ये बहुत अच्छा एक approach है to connect with people and to make awareness on disability movement, and we are quite hopeful that in the times to come, if the things are done in the right way, there are certain events like you can say frame running, which are called race running bicycle, जो कि यूरोप में 25 साल से है और इंडिया के अंदर वो अभी है भी नहीं। सो उसमें वो पैरालंपिक गेम में इवेंट है और हम अभी इसमें स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी से कोशिश करेंगे तो 2032 में हमारा विजन है कि विल बी एबल टू प्रोड्यूस पैरालंपियंस इन दैट। सो स्पोर्ट्स इज अ थिंग यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एट द ग्रास रूट लेवल। हम इसी तरह से पॉलिसी बनाई है हमने। हमारा एक 4 स्टेज प्रोग्राम है which is awareness, because most of the people are not aware what is cerebral palsy. So to make people aware first, and then to work in, and then the classification is a key issue, and then later on conduct competition, conduct coaching camps for them, then send them abroad for competition, because प्रशिक्षण जो है करके ही जाएंगे प्रतियोगिता के अंदर। तो 4 स्टेज प्रोसेस को हम करके आगे लेके जाएंगे और हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, and especially to Sports Authority of India, who provided a fantastic infrastructure. This is competing with all international events, and whatever we requested or we gave a indent or a requisition we made to Sports Authority, they made it happen in a very short time. All the people, I'm very grateful. This KHELO India is a very good platform for para KHELO India, this vision, because many sportsmen will come. अभी हमारे पास लिमिटेशन 8 टीम की है. We want to promote women also into this football, because we have a good chance to be in the world championships in the finals and semi-finals there. So we are working towards these directions. आपने बताया कि इंटरनेशनल में हम बहुत सारे में टीम भेजते नहीं हैं, तो इसका मतलब हम मेडल्स तो हम छोड़ ही रहे हैं। अगर वो टीमें भेज दें तो हमारे मेडल जो हैं वो कई गुना बढ़ सकते हैं। Yes, if every disability is given an opportunity to work in their domain, so it's they are specialized to conduct it. Like if visually impairment children को IBSA को दे दिया जाए to promote and do their event, they know more about the visual impairment. A particular organization, a single, it's not an umbrella organization, cannot do all that. So like we are looking cerebral palsy, there is a wheelchair amputee sport also, and there is intellectual disability. I think Special Olympics Bharat should also be should have also been a part of these games, because they are also going. Now that is maybe in the times to come, Sports Authority will definitely take them on board, because these are not only for visibility, it's make the life better for these children, better life for everyone and their families also.
And state have to also come forward in this, because I remember in our swimming championship for cerebral palsy which we conducted, one of the boy from Tamil Nadu won a medal, and believe it, he got 13 lakh rupees from the state government, and states are also promoting them. And the family, they're very humble families. And imagine 13 lakh rupees. So many more children will come from that region. After all, finance is a big issue, and I'm sure then many states will do it. Sports Authority will provide the infrastructure. And vision तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अनुराग सिंह ठाकुर जी उसमें चल ही रहे हैं बिल्कुल. हमें बहुत प्रोत्साहन दिया उन्होंने, और वी आर हेयर ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर. अभी आप कितनी गेम्स को कंडक्ट करें, आपके फेडरेशन के अंडर कितनी गेम्स हैं? We have conducted two nationals in cerebral palsy athletics in 30s class domain. We have conducted two nationals in the football. And we have conducted swimming championship. We are conducting boccia now in the times to come. We'll be conducting taekwondo. We'll be conducting many more, about 7 or 8. Everybody can choose whatever event they want. जब हम उनको बताएंगे, और हमारे जो डिसिप्लिन है उनकी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से है. I don't expect the child to play football when his legs are very weak. So we guide them. We have tied up with Abhinav Bindra Foundation to work on this scientific support with them. पैरा गेम्स के जो खिलाड़ी हैं, पैरा गेम्स के जो एथलीट्स हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है, कभी गवर्नमेंट से इस बारे में बातचीत हुई? मेरे ख्याल भारत सरकार का जो काम है भारत सरकार कर रही है. And because you can't provide support to everybody, there's an element there that one has to come up to a level to give support. First of all, they have to prove themselves at the district level and state level. After all, the federation job is to identify those talents and bring up to the national platform. And if they do well in the competitive events, then they are taken to the international platform. इंटरनेशनल लेवल पे किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एफिलिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं? You see, we were members of Cpsfi. They are the founder members of IPC. And now two bodies of the disability, they were the founder members of IPC. One is Cpsfi, the other is IWAS. They have merged into this, and now they have come into World Ability Sport, which is one organization. And we had World Ability Games in Thailand, in which our children won about 13 medals in about a 22 member contingent, which is a very big thing for us. टीम जाती है, फंडिंग कहाँ से, पैसा कहाँ से अरेंज कर पा रहे हैं? देखो, funding is one issue which is always everybody short of funds, and we have been there are certain limitations which officials want to help us, but there are certain constraints which I'm not going to talk about it. And I think the funds, if अब हमारी vision अच्छी होगी, funds अपने आप generate हो जाते हैं. I have no right to be a president in the organization when I can't generate funds for the children, whether it is through CSR or through donations or through anything else. Government is of course supporting us in some way or the other, whatever best they can. But obviously, more support like KHELO India is a big boost to the, it's a very good thing for everyone. इससे पहले सीपीएसआई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, पिक्चर में नहीं आई थी, यहाँ पे अभी विजिबिलिटी बनी है, स्टेट लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी? देखो, हमने पहले बताया कि हम जो है पहले अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So our primary focus, which our organization, our board does, is awareness. So awareness we have done about 37 sessions of awareness. Sangeeti programs हमारे होते हैं. Sangeeti is an awareness program. It is an interaction between two people. Good. अभी तक क्या होता था cerebral palsy के अंदर, बच्चे उनके पेरेंट्स उनको फिजियोथेरेपी कराते थे, या वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, मोमबत्ती बना रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं. लेकिन हमने एक स्पोर्ट्स एलिमेंट डाल दिया उसके अंदर. अब स्पोर्ट्स में दे बिकम वेरी इंटरेस्टेड, दे वांट टू प्ले, उसकी फिजिकल एबिलिटी हो जाती है. And what happens is that children are able to come up, and we have heard a lot of case studies where children were on wheelchair, and after taking up sports in cerebral palsy, they are running nowadays and representing the country, which is a big boost for everybody. It makes lives better for those children, you see. और उससे क्या है, उनकी मसल पावर बढ़िया हो जाती है. फ्रॉम व्हील चेयर से उठ के आती है. एक लड़की है जीतू कंवर, आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट हर. शी इज रिप्रेजेंटेड इंडिया. शी वाज अ टॉपर इन एमए इन राजस्थान यूनिवर्सिटी. ड्यूरिंग हर स्टडीज कैरियर शी हैड अ प्रॉब्लम and she could not focus on anything. She was in a wheelchair. After becoming aware of cerebral palsy, she started running, somebody to advise her, and then cerebral palsy के बारे में पता लगा. Then she started running, then she started competing, and then now she's there, and she represented India and Thailand, and she went to Portugal with us also. ये जो खेल के आते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल के आते हैं, जीत के आते हैं तो मोटिवेशन तो होता ही है. इंटरनेशनल जब आप पार्टिसिपेट भी कर लेते हो, वापसी जब आते हैं, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि पेरेंट्स भी जो है वो किसी हद तक जो है वो परेशान हो जाते हैं, मोटिवेट नहीं कर पाते हैं. मेरा ख्याल से शायद गेम्स के थ्रू ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. पेरेंट्स का वहाँ क्या रिएक्शन रहता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है गेम्स को लेकर? हरपाल जी, मैं आपको बताऊं, एवरीबडी वांट्स रिकॉग्निशन.
मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब कोई बच्चा जीत के अपने गांव में जाता है और उसका जिस तरह से वेलकम होता था. It used to be a social stigma earlier in the society. Yes. Now bringing sports element into that, what government has done is bringing sports also an element to a part of this KHELO India, whatever thing. जो भी जीतता है उसको एक रिकग्निशन मिलती है बच्चे को, एंड दे आर सो हैप्पी. द पेरेंट्स जो कहते हैं यार ये तो बेकार है, ये है, इसको ठीक नहीं है, इसको यूजलेस. Now through sports you see in football there's so many children who are doing, and whatever recognition they are getting they feel very proud about it. And we are the happiest in our board, our cerebral palsy executive board, that what हमारा क्या है कि हम we want to see smiles in their faces. That's our ultimate motive, that way. And we feel very happy equally when we see the smiles on their faces when they win, and we want many more people to smile all over. अभी नियर फ्यूचर में आपकी कोई इवेंट्स होने जा रहे हैं? Well, we have got a lot of things. We want to conduct cerebral palsy national games, which are also there. And as you said, financial is a big crunch. Let's see which state come forwards for that. We want to have, because this has to happen in every sport, a combined national event where it is like that. Like, why should government do it all the time? Corporate should also come forward for this. It should not be called corporate social responsibility. It should be corporate social opportunity. You see, so that way they should not take it as a responsibility. But I'm sure with times to come, when awareness is there, people are winning medals, many more will come forward for it. I'm very optimistic on these issues. नेशनल गेम्स और इंडियन ओलंपिक की तरफ से किसी तरह का कोई सपोर्ट, कोऑपरेशन? Well, anybody is welcome, and we are very hopeful they should be on the board here. And so far, we have not approached anybody because आगे हो सकता है आगे टाइम में जरूरत पड़े तो हम जरूर अप्रोच करेंगे. अभी तो हम भारत सरकार के पास हैं initially, because a lot of CSR will come into play only provided you are recognized by a national government body. So Sports Authority of India and Ministry of Youth Affairs, I told you, have believed in us and recognized us. I'm sure many more corporates will come forward to support us under CSR. तो आपके पास मिनिस्ट्री का रिकॉग्निशन है? Yes, sir, we were recognized in the last 22 months only. We are recognized by the Ministry of Youth Affairs. Congratulations. Thank you. Thank you. मतलब इन बच्चों को आने वाले टाइम में जॉब्स और दूसरी तरह की जो बाकी प्लेयर्स को वो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी? Sir, I'll tell you, this federation is different as to why, because we don't charge any entry fee. We invite children who are competent enough to compete in this national championship through their states. We take no entry fee. We provide free accommodation in Jawaharlal Nehru Stadium in Sports Authority of India's wings. They are fully air conditioned. Food is on. It is controlled by a dietitian. Okay. So good facilities are there. Air conditioned rooms are there. Infrastructure is there. What else the players want? And we don't charge a rupee also from any player. And whenever we had sent a team abroad, also is through our own resources, which we have been able and fortunate to generate and take the children forward that way. चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये अभी तक जो हम खासतौर से ये पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स और कोर्ट केसेस स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट हो रही है, खेलो इंडिया और ये सब इवेंट्स करवाए जा रहे हैं, बट फेडरेशन लेवल पे जो है वो झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो अगर मैं देखूं पिछला 25, 30, 35 साल का अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट मतलब वर्स्ट पीरियड है उसी हिसाब से अगर देखूं तो. लेकिन आप जैसे लोग जो इन बच्चों के लिए कर पा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ये सोचना ही अपने आप में मेरा ख्याल से लोग सोच नहीं पाते हैं. आप सोच कर उसको जो है वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं और इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा अपने आप में गर्व की बात है. और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में हम इन बच्चों को जो है वो एक डिफरेंट लेवल पे देखेंगे, जहाँ के इनका फिजिकली नहीं, खाली सिर्फ साइकोलॉजिकली भी जो है वो मोटिवेट होंगे. और इनके पेरेंट्स जो हैं वो भी देख पाएंगे कि उनके जो बच्चे हैं डिसेबिलिटीज के बावजूद वो देश के लिए जो है वो नाम कर रहे हैं, मेडल्स ला पा रहे हैं. वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी. हमारे चैनल जी. तो हरपाल जी, मैं एक चीज बताना पाऊंगा कि हमारी फेडरेशन डिफरेंट कैसे है कि हमारे जितने भी जो बोर्ड है, दे आर वेरी पैशनेट. It has to be very passionate thing to come up to this, to take this organization to that level. So passion के बिना ये नहीं आ सकता है. So जो passion है तो सब कुछ achievable हो जाए. Obviously you have talked about the court cases. These are professional hazards. And once you are doing a positive, हमने अपना काम करना है. हम चलते रहेंगे. Let people say anything. We will keep on doing. And because if I start worrying कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने क्यों किया, my main focus will be deviated. So we are working towards development. तो आपके साथ जो टीम जुड़ी हुई है उनकी भी जो सोच और विजन जो है वो उस तरह की है? The mostly are retired bureaucrats and who are always willing, and they got since they are retired from the superannuated from the departments.
they also want to work in this domain, and they keep them occupied also. Everybody has a sector, role to play in our organization, which we are able to carry it forward the way we are. It's चलिए for हमें people to अगर decide जी how we are. हमें फोटोग्राफ मिलेगी तो हम एक बार पूरा बोर्ड जो है वो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि कौन-कौन लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो इन बच्चों के में इतना मोटिवेशन जो है वो ला पा रहे हैं और देश के लिए जो है वो एक जो जो छूटे हुए लोग हैं जो जिनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं ला पा रहे हैं उनको वो मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर रहे हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने का बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you थैंक so यू। much. Thank you.